So we have seen different types of relations: empty relation, universal relation, then a relation which is symmetric, a reflexive relation, transitive relation, and if a relation is all these three, reflexive, symmetric, and transitive at a time, that type of relations are known as equivalence relation. Equivalence. Okay. So these are just examples. We'll do it fast just to make you the idea clear. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. Okay. First relation, देखो your set is set of integers from 1 to 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 14. A relation is given as set of all ordered pairs such that, see how many relations are there in the set. A cross A में actually 14 into 14 elements होगा, right? A cross A में, isn't it? Yes, sir. 14 into 14 कितना है? 196. 196. This is number of elements of A cross A. This is 196. So number of relations on A में कितना relations होगा? A cross A का subsets, A cross A के लिए 2 to the power 196 subsets है. So see how much big that number. So many relations are there. उसमें से एक relation दिया है R is equal to सभी ordered pairs in such a way that 3 times the first number minus second number is equal to 0. So, what are the possible elements? Suppose आप x को 1 दे देंगे तो 3 into 1 3. So 3 minus 3 is 0. So 1 comma 3 is in the relation, isn't it? Then x को आप 2 दे देंगे तो 3 into 2 6. So 6 minus 6, so y should be 6. x को आप 3 दे देंगे तो 3 into 3 9 minus y is equal to 0, मतलब y should be 9. x को आप 4 दे देंगे तो 4 into 3 12. So 12 minus 12 is 0, so y should be 12. x को आप 5 दे देंगे तो 5 into 3 15. So 15 minus y is equal to 0, मतलब y is equal to 15. But 15 is not in the set, so your relation is, this is your relation. One set 1 comma 3, 2 comma 6, 3 comma 9, and 4 comma 12. 12. Now, so we wrote the relation only. Now the question is whether it is reflexive. Reflexive है क्या? Reflexive है तो हर एक एलिमेंट खुद को रिलेट होना चाहिए. सो सेट ए में 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स है. सो आपका रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 5 5 6 6, देन अप टू 14 14 रिलेशन में होना चाहिए. बट है क्या? एक भी नहीं, isn't it? So you can say any example, you can say 2 comma 2 not belongs to R. So that implies relation is not reflexive. नॉट रिफ्लेक्सिव करके प्रूफ करने के लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ. सो मान लीजिए इसमें से सपोज रिलेशन में 1 1 द 2 2 द सब द 10 comma 10 द देन 12 comma 12 द 13 comma 13 द 14 comma 14, सपोज मान लीजिए रिलेशन में था, देन इज इट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन? Is it a reflexive relation? Yes, sir. Check it. हर एक एलिमेंट अपना खुद को रिलेटेड है क्या? Sir. Yes, sir. There is 11 comma 11. Sir. 11 comma 11 there है क्या? नहीं है सर. नहीं है. सो बाकी सबके लिए है. कम से कम एक एलिमेंट को नहीं है तो
that is not reflexive. ठीक है? So reflexive होना है तो every element, for every element, that element should related to that element itself. Okay. So नहीं है करके प्रूफ करने के लिए one example is enough. अब वो सर आपने 2 2 लिखा, 1 1 भी नहीं है, so you can write 1 1 also, you can write 3 3 also, जो भी नहीं है कोई भी एक ही example is enough. Clear? So it is Yes, not sir. reflexive. Now symmetric है क्या? Symmetric है क्या? बहुत आप बहुत फास्ट बोलना चाहिए ना, ये सिंपल टॉपिक है, इतना टाइम क्यों लगा रहे उसमें से? No, sir. नो, क्योंकि सिमेट्रिक है तो x कॉमा y है तो नहीं तो a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू ये होना चाहिए. से इधर आप देख सकते हैं 1 कॉमा 3 रिलेशन में नहीं है सॉरी है, बट 3 कॉमा 1 is not in relation. Relation. That implies R is not symmetric. नहीं है करके प्रूफ करने के लिए वन एग्जाम्पल इज इनफ. नाउ ट्रांसिटिव है क्या? ट्रांसिटिव है क्या? No, sir. नो, बिकॉज 1 कॉमा 3 1 comma 3 में and है 3 comma 9. एंड 3 कॉमा 9 रिलेशन में है, बट 1 कॉमा 9 रिलेशन में नहीं है. सो दैट इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांसिटिव. Transitive. Okay. Agar this question is like this, check whether the relation is equivalence. So आपने फर्स्ट तीनों चेक करने की कोई जरूरत नहीं. फर्स्ट में आपको मिला रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. तो बाकी दोनों चेक करने Equivalent. की कोई जरूरत भी नहीं, बट इधर उन्होंने तीनों चेक करने के लिए बोला, इसलिए चेक कर रहे. अभी तीसरा पॉइंट में एक चीज मुझे आपको बताना है. जैसे आपको इधर ऐसे 2 पेयर मिला, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 9. मान लीजिए ऐसे 2 पेयर ऑफ एलिमेंट्स आपको इस सेट में नहीं मिला है तो देखो 2 कॉमा 6, देन 6 कॉमा समथिंग इज नॉट देयर, और 4 कॉमा 12, 12 कॉमा 12 is not related to any element, or 3 comma 9, 9 is not related to any other element. So मान लीजिए ऐसे 2 pair of number इधर है, actually 1 is related to 3, 3 is related to 9. ऐसे 2 pair है तो then 1 should be related to 9, but ऐसे 2 pair of elements आपको नहीं मिलेंगे तो then by default we say that relation is transitive. क्योंकि ट्रांसिटिविटी का कंडीशन ऐसे है कि if A related to B and B related to C, ये दोनों हैपन किया है तो then A should be related to C होना चाहिए. अगर ये दोनों हैपन नहीं कर रहे then no issue, by default it is transitive. Is it clear that concept? Yes, sir. Okay. So first example हो गया. अभी हम go to the second example. शुरुआत है इसलिए हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं. ओके. रिलेशन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर का रिलेशन है. इट इज डिफाइंड लाइक दिस, सभी ऑर्डर्ड पेयर. सो रिलेशन इज ऐसे है कि y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज लेस देन 1. सो x का वैल्यू हो सकता है, नेचुरल नंबर है, सो x का वैल्यू हो सकता है 1 2 3, 2, 3. 1 भी आ सकते हैं ना, लेस देन 4. नेचुरल नंबर में 1 भी आते हैं. सो x को 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6, x को 2 दे देंगे तो 2 प्लस 5 7, x को 3 दे देंगे तो 3 प्लस 5 8. ओके. सो इज इट reflexive? Is it reflexive? sir. Not reflexive, No, sir. because 1 comma 1 not belongs to R.
So that implies R is not reflexive. Then सिमेट्रिक है क्या? नहीं 2,7 रिलेशन में है, बट 7,2 रिलेशन में नहीं है. नहीं That implies R is not symmetric. Then transitive है क्या? Default हाँ, by transitive. default it is transitive. Okay. यस सर हाँ, क्योंकि ट्रांजिटिव हो सकता है ट्रांसिटिव हो सकते हैं करके नहीं, इट इज ट्रांसिटिव. R is ट्रांसिटिव. नहीं है करके आपको प्रूफ करना है तो आप मुझे ऐसे दो पेयर दिखाना है कि फर्स्ट नंबर रिलेटेड टू सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर रिलेटेड टू ए थर्ड नंबर, देन ये रिलेटेड टू सी. ऐसे है तो, ऐसे नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं है. ए रिलेटेड टू सी नहीं है तो, बट यू कांट गेट ए पेयर लाइक दैट. 1 is related to 6 but 6 is not related to any other element. 2 is related to 7, 7 is not related to any other element. 3 is related to 8 but 8 is not related to any other element. So you will not get a number, two set of elements like this, A related to B and B related to C. ऐसे आपको नहीं मिलते. So ट्रांसिटिविटी बोलते हैं कि ऐसे मिलेंगे तो then first should be related to C. ऐसे नहीं मिलेंगे तो there is nothing there, so it is automatically it is transitive. Then next question. देखो relation set, your set, all these are all finite sets. Set 1 2 3 4 5 6. Relation is like this. Set of all, now always set relations लिखा है. Set of all ordered pairs such that y is divisible by x. Y is divisible by x मतलब second number is divisible by first number. So 1 comma 1 आएगा, 1 comma 2 because 2 is divisible 1, 1 comma 3 because 3 is divisible by 1, 1 comma 4, 1 1 comma comma 5, 1 comma 1 comma 6 आएगा. Then 2, then 2 से divisible 2 comma 2, 2 4 is 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6 is 2 divisible comma by 2. अभी 3 is divisible by 3, 3 6 6 is divisible by 3, 4 is divisible by 4, 4 5 5 is divisible by 5, 6 6 is divisible by 6. So these are the elements, or this is in rule form, set builder form. This is in roster form. The second one is in roster form. Now is it reflexive? No, non-reflexive. Sorry. No. Set What? में देखो set में Yes, 6 sir. elements है, so 1 comma 1 is there, 2 2 comma comma 2 2 is there, 3 3 comma comma 3 is there, 4 comma 4 is there, 5 comma 5 is there, 6 comma 6 is there. reflexive You can say that A comma A belongs to R for all A belongs to that given set. So आपको proof करना है तो आपको पता है since A is since A is divisible by A, isn't it? For any A, एक नंबर का उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना. You can divide any Yes, sir. number with that number, you will get the answer 1. So उसका 1 मतलब क्या है? So A comma A belongs to the relation for all A in that given set. This implies Yes. R is reflexive reflexive. अभी सिमेट्रिक है क्या? है सर है. See 1 comma 2 belongs to R, but 2 comma 1
Not belongs to R. Yes, sir. So it is not symmetric, isn't it? Clear? Then transitive है क्या? देखो जनरली भी प्रूव कर सकते हैं. लेट A comma B belongs to R and B comma C belongs to the relation. So A comma B belongs to R मतलब B is divisible by A, right? And B comma C belongs to R मतलब C is divisible by B, correct? So C is divisible by B and B is a number you can divide by A. So C is divisible by A, isn't it? Yes, sir. C को आप एक नंबर को B से डिवाइड कर सकते हैं. एंड से फॉर एग्जांपल आप 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो वैसे तो ऑटोमेटिकली आप 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, बिकॉज दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, जैसे दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर B, C, and you can say it is 2B. Or 2 no, 4 is equal to क्या बोलते हैं 2C बोल सकते हैं, isn't it? आए समझ में? तो हमारा नॉर्मल लॉजिक B is, you can divide the number B with the number A and you can divide C with the number B. So आप समझने के लिए एग्जांपल बोला, you can divide 4 with 2 means पूरा डिलीट करके बताता हूँ. So your number, okay, you are dividing a number B with A. So this is your A, this is your B. Then you can divide another number C with B, 12 divided by 4. Okay, so automatically you can divide then C with A also, because A already divides B. Or you can say B is a multiple of A. So it is nothing but क्या है? 2A. So we can divide, Yes, sir. isn't it? Is it correct? Yes, sir. सो और सिंपल लॉजिक में हम एक एग्जांपल दिखाएंगे तो नहीं चलेगा, है करके प्रूफ करने को जनरली प्रूफ कर देना. सो ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ऐसे है. तो देखो इसका मतलब ए कोमा बी रिलेशन में है मतलब बी इज डिविजिबल बाय ए, बी कोमा सी मतलब सी इज डिविजिबल बाय बी. सो सी कैन वी डिवाइड सी विथ बी. So B itself can be divisible by A. So that means C is also divisible by A. So we can say A comma C belongs to R. So it is, so therefore R is transitive. और इधर आप देखो ऐसे पे देखो आपको 1 comma 2, 2 comma 4, then 1 comma 4 there, 1 comma 3, 3 comma 6, then 1 comma 6 is there. आया समझ में? सो एक तो नहीं है तो इसमें से काउंटर एग्जाम्पल आप प्रूफ दिखा देना, है तो आप इसको प्रूफ कर देना. सो अभी तो इतना एलिमेंट्स है तो कभी चेक करना मुश्किल होगा. अभी तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, 9, 10, 14 एलिमेंट्स है, तभी हमें थोड़ा चेक करने में डिफिकल्टी आ रही है. तो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में है तो कैसे चेक करेंगे? सो वी हैव टू चेक इट जनरली ओनली. सो दिस इज द लॉजिक. हम अस्यूम करेंगे A is related to B and B is related to C.
A is related to B मतलब you can divide B with A और B is divisible by A. B is related to C मतलब you can divide C with B or C is divisible by B, and you can already divide B with A, so you can say C is divisible by A. Okay. अब ये देखो, relation is set of all integers, so your set is all integers. Relation is like this, difference is an integer. So आप लिखेंगे तो difference is an integer मतलब ये पूरा r क्रॉस r ही आएगा, सॉरी z क्रॉस z ही आएगा ना, पूरा z क्रॉस z आएगा ना, isn't it? Your set is z, your set is z, your relation is from z to z. So इधर आप ये कोई भी एक इंटीजर ले लो, इधर अनदर इंटीजर ले लो, so फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में होना चाहिए, so x comma y, so difference of any two integers is an integer, isn't it? Difference of any two integers is an integer, correct? So आपका रिलेशन में पूरा z क्रॉस z है, that means this is your universal relation, correct? Yes, sir. Yeah. गोपाल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, अभी आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है क्या. देखो, फॉर एनी इंटीजर माइनस दैट इंटीजर is 0, comma, which is an integer. That means x comma x, और आप बोल सकते हैं कि x related to x for all element in the set of integers, isn't it? Because they are difference. Any integer minus that integer, it is 0, and that is 0 is an integer. So that belongs to your relation. 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, -1 आएगा, 0 0 आएगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि एनी इंटीजर माइनस दैट इंटीजर इटसेल्फ इज 0, कोई भी इंटीजर के लिए, एंड 0 इज एन इंटीजर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव. नाउ आप एक एग्जांपल निकाल के सर 4 minus 4 is 0, so 4 comma 4 रिलेशन में है, सो हेंस रिफ्लेक्सिव. ऐसे बोलेंगे तो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आपने 4 है करके बोला, बट 5 है करके, और 6 है क्या, और 7 है क्या. सो इन जनरल वी आर टेलिंग हियर दैट एनी इंटीजर माइनस दैट इंटीजर इज 0, which is an integer. So that means any integer is related to that integer itself. So it is reflexive. अभी ट्रांसिटिव है क्या? So transitivity के लिए, okay, let x is related to y. So that implies x minus y is an integer. Integer. So x minus y integer है तो y minus x क्या होगा? Y minus x is also an integer. Only thing is sign will change. जैसे 10 minus 5 है तो 5 आएगा, 5 minus 10 है तो minus 5 आएगा, but still it is an integer. So y minus x integer है तो as per relation x minus y integer है तो x comma y relation में आएगा, नहीं तो x is related to y. और y minus x integer है तो आप ऐसे लिख सकते हैं y comma x किधर आएगा, रिलेशन में आएगा, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं y is related to x. So this implies it is R is symmetric. अभी R ट्रांसिटिव है क्या? उसके लिए हम क्या करेंगे? We will assume
let x is related to y is related to z. X is related to y मतलब x minus y is an integer and y related to z मतलब y minus z is an integer. So if you add two integers, therefore x minus y plus y minus z. If you add two integers, you will again get an integer only, correct? So इसका मतलब x minus z Is also an integer. integer. X minus z integer मतलब as per your formula or relation x comma z belongs to the relation, or in other words you can say or x is related to z. That implies r is transitive. So this particular example, this is reflexive, symmetric and transitive. So it is an equivalence relation. Yes. It's an example of an equivalence relation because it's reflexive है, symmetric है, transitive भी है. Now ये आपको देखो, these are all just to understand the concept. So you have to understand the concept because there may change in the exam pattern this year also. This year there may be more multiple choice question. That multiple choice question measures how well you understand the concept. So relation in a set of, okay, your set is set of all human beings in a town at a particular time. Say for example, set of all human beings. उसमें से मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, सभी आएगा. जैसे in Parthur or in Jalna on July 1st or whatever it is, particular time. Now, first one, relation is like this. X and Y work at the same place. Reflexive है क्या? Yes, sir. Because x comma x relation में है, कोई भी x है तो, isn't it? क्योंकि x and x में same person, Johnson and Johnson, working in Navodaya, same place because दोनों same person है ना. So x comma x belongs to R for all x in that particular set. So it is reflexive. What about somebody is gone? It's Somebody symmetric. What about symmetric? देखो It is symmetric. yeah, x comma y belongs to a relation में है, मतलब x and y are working at the same place. So then y comma x is also in the relation because x and y are working in the same place, मतलब y and x are also working in the same place. So it is symmetric. Transitive है क्या? X related to y related to z. That means x and X is y are related. working at the same place, y and z are working at the same place, then automatically x and z are working at the same place. So that relation is transitive also. So it is reflexive, symmetric and transitive. Clear? So it is a so Yes, sir. reflexive, symmetric, transitive. So it is an equivalence relation. They are not asking whether it is an equivalence relation or not, but just we are saying it is an equivalence relation. Next, देखो, x and y live in the same locality. So it's same as above. Same as above. It is working at the same place and living in the same locality. Same as above. Only thing is, first place में same place में work कर रहे बोला. Second question में same place में live कर रहे बोला. So it's the same thing. Now, x is exactly 7 centimeter taller than y. Reflexive है क्या? X comma x
रिलेशन में आएंगे No, कि sir. नेवर आएगा, क्योंकि सेम पर्सन का हाइट उनसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा होते हैं क्या? So x comma x will not come in the relation Really? for any कोई भी पर्सन का हाइट उनसे 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होते, उनको इक्वली होते हैं ना, राइट? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, Non-symmetric. ट्रांसिटिव है क्या? x रिलेटेड टू y, इफ इसका मतलब है x is exactly x is, okay, I'm just writing like this just समझने के लिए, हाइट इज y का हाइट से 7 ज्यादा, isn't it? y का हाइट से 7 ज्यादा, और हाइट x is 7 सेंटीमीटर taller than y. So then y comma x आएंगे क्या? इसका मतलब No. क्या है? y is 1 centimeter shorter than it. shorter than x, not taller than x, isn't it? So y comma Yes, x sir. कभी नहीं आएगा, so it is not transitive. Symmetric. Okay, sorry, symmetric. Now transitivity है क्या? देखो x is related to Non-transitive. y is related to z. So x is 7 centimeter taller than y, 7 cm taller than Why? y. Then y is 7 centimeter taller than z. X is 14 centimeter taller So than then Z. देखो this is y. So y से 7 centimeter taller है x, and y is 7 centimeter taller than z. So suppose this is 7 centimeter, तो z y का इतना ही आएगा ना, isn't it? So उसका मतलब x कितना बड़ा होगा z से? 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना, Yes, sir. करेक्ट? क्योंकि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो उससे और 7 सेंटीमीटर बड़ा है x. सो x एंड z में गैप कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर का गैप आएगा. सो उसका मतलब x comma z not belongs to that relation, so it is not transitive. Transitive. Yeah, so you can see that this particular relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive, correct? Yes, sir. What about next one? So concept clear होना. x comma y रिलेशन में आएगा, और x is related to y मतलब x is wife of y. So reflexive है क्या? x comma x. No, sir. राइट, क्योंकि एक No. पर्सन खुद का वाइफ Non-symmetric. नहीं हो सकते, राइट? नाउ सिमेट्रिक है क्या? x is x related to y मतलब x is wife of y, then y related to x मतलब y is wife of x. ऐसे होते हैं क्या? x is wife of, वजह से देखो, अंजू related to Johnson, because Anju is wife of Johnson, but Johnson अंजू, ऐसे हो सकते हैं क्या? जॉनसन इज वाइफ ऑफ अंजू, ऐसे आते हैं क्या? इट विल नॉट कम, राइट?
So x is Yes. related to y, but y is not related to x. Either wife, first one is wife, second one is husband. So x is x comma y matlab x is wife of y. So Anju is wife of Johnson. But Johnson comma Anju nahi aayega kyunki Johnson is not wife of Anju. Johnson is husband of Anju. So y comma x उसमें से नहीं आएगा. So it is not symmetric. अभी transitivity है क्या? X related to y, y related to z. That is x is wife of y and y is wife of z. That's the meaning, na? So tell me, is it transitive or not? Let me check your understanding. Non-transitive. Hmm? It's non-transitive, sir. Why? By default, it is transitive, na? Because I say you will not get two pair like this. You won't get any pair like this. Yes, by default it is Because transitive. x is wife of y matlab this is male, isn't it? Then wife of wife, y is wife of z matlab ये female होना चाहिए. Correct? Yes, sir. So that means आपको y से two pair नहीं मिलेगा in that relation. So symmetric में so ट्रांसिटिविटी में ऐसे टू पेयर मिला है तो एक्स रिलेटेड टू इज होना चाहिए, बट इधर ऐसे टू पेयर नहीं मिलेगा, सो बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रांसिटिव, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक. क्लियर? सो बाकी क्वेश्चंस वी विल डू इन टुमारोज क्लास. Remaining you can check this Okay, one, last sir. one you just check, x is father of y, that you check. Interesting है ना, मजा Okay, आ रहा है sir. ना? ठीक है, so see you tomorrow.